इस समय से पहले रोटेशन का मतलब होता है उड़ान भरते वक्त विमान के आगे वाले हिस्से जो कि नोज है उसका ऊपर उठना, इस तरीके से। अब जमीन से ऊपर उठ सके ये काम जो तय की गई रफ्तार है, जो थ्रस्ट है, उस पर किया जाता है, जो 787 बोइंग जैसे विमान के लिए आमतौर पर 140-160 नॉट्स होती है। अगर विमान इस रफ्तार से पहले ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो विमान को ठीक से लिफ्ट करना यानी ऊपर उठने की ताकत नहीं मिल पाती है। अब जानकार इस हादसे की वजह इनमें से फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की गलत सेटिंग एक वजह हो सकती है, ये मान रहे हैं। ये एक्सपर्ट एक बात सुनिए। I think the pilot flying said to the co-pilot, gear up at the appropriate time. I think the co-pilot grabbed the flap handle and raised the flaps instead of the gear. If that happened, and this is a big if that happened, this explains a lot of why this airplane stopped flying, why the lift over the wings died. Because at that point now, the flaps are retracting, all that extra lift you're producing in the wings goes away. You're already slow, you already got the power pushed up all the way. This airplane's as heavy as it's ever going to be in this flight, and you've still got those great big landing gear out there producing all sorts of drag. This is a bad combination at this point. You see the nose now start to come over. Now, why would the nose come over? Because the airplane is trying to create as much lift as it can over those wings. And if the flaps are coming up, it's going to nose over to get even more airflow over those wings. That's going to be a very, very uncomfortable feeling for the pilot at the controls. Why? Because he's losing airspeed and he's going to begin to lose altitude now. Remember, he thinks the gear has come up. He might not know that the flaps came up. He just sees a motion over next to him, and he's looking outside going, wait, what's going on? It's all very confusing, and it all happens in a split second. यानी कि एक पॉसिबिलिटी रही हो सकती है कि कहा हो कि गियर अप, लेकिन हाथ तो है वो फ्लैप पे था। गियर अप का मतलब ये होता है कि वो जो बता रहे थे, जो एक्सपर्ट है वो कह रहे कि नोज जो है वो ऊपर जा रही है, विमान ऊपर होते होते गियर अप के लिए कहा, गियर अप हुआ नहीं, फ्लैप अप हो गया, शायद गलती से होगा, ये पॉसिबिलिटी वो बता रहे हैं। उससे क्या हुआ, विमान का जो नोज है वो नीचे हो जाता है, जो इस विमान में एक पॉसिबिलिटी दिखती है, और वो ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाता है, ये कह रहे थे एविएशन एक्सपर्ट। तो एयर इंडिया बोइंग विमानों का इस्तेमाल करती है, ये एयर इंडिया का विमान था। भारत में एविएशन के तौर पर जाहिर सी बात है उसके बेड़े में ये विमान है, सबसे सुरक्षित और सबसे आधुनिक इसे ही माना जाता है, ये जो ड्रीम लाइनर है। अब इस बड़े हादसे के बाद एयर इंडिया के सीईओ भी आए, उन्होंने भी साइट का जायजा लिया। उनका भी बयान आया है कि एयर इंडिया भी हर तरीके से जांच एजेंसियों का सहयोग करेगा, खुद भी इसकी जो है वो जांच करवाएगा। क्या कहना है एयर इंडिया के सीईओ का, आइए सुनते हैं। This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. I know that there are many questions, and at this stage, I will not be able to answer all of them. But I do want to share the information we have at this time. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time, but anything we can do now, we are doing. We know that many people are concerned for the welfare of their loved ones. For now, our teams are working around the clock to support passengers, crew, and their families, as well as investigators, however we can.